topics we have with the MCSC, Windows Active Directory. So we are left with this theoretical discussion, and then the plan is to start Azure Active Directory from tomorrow onwards. Okay. So would like to start with the basics of IP addressing, if you guys are aware of this. So what is an IP address? Can someone tell me? It is like address of a machine, Address of a machine. Okay. In like order to laptop or reach out to a machine, yeah, you have to have the IP address with you. Okay. Over the network, it's an address representing that particular machine over the network. So it's a logical address basically. Okay. yes. So what is a MAC address? Uzma, Mm, any idea on this? MAC address and IP address? no, Razi. Okay. Have you ever heard about it? Yes, but I did not hear it very frequently. Okay. Okay. So for a computer, for a given computer, let it say it can be a laptop or a desktop or any computer, there will be two type of addresses for that particular device. One will be MAC address and another will be IP address. MAC address is also called as a physical address. Okay. And Okay. IP address is called as a logical address. Okay. So, have you ever seen the hardware of a computer? I mean, let's say, we have a CPU at our home. So, have you ever opened the cabinet and gone through the motherboard and everything? Anytime? Got any chance? What all we Yes, have sir. on the motherboard and all? Okay. Yes. Uh, so, have you ever seen something called NIC card, Network Interface Card? Cord in the sense you mean wires, bus cables. See, you will have a network cable, right? Which you will plug in to your PC, to your CPU, right? Yes. Network cable. Mm, So that network cable will be pitched in to over the motherboard, somewhere over the motherboard, right? yeah. So let me be more clear with this. तो आपके पास एक राउटर है घर पे, ठीक है? You have a router at your home. वो Yeah. राउटर से आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क केबल लगाएंगे. नेटवर्क केबल लगा के आप क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे एक पोर्ट रहेगा. वो पोर्ट में आप नेटवर्क केबल इंसर्ट करेंगे, राइट? Yes. 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 वो नेटवर्क केबल जहाँ पे इंसर्ट होगा वो कहीं ना कहीं जाके मदरबोर्ड पे कनेक्ट होगा, राइट? Yes. Yes. जी. तो वो मदरबोर्ड पे एक कार्ड होता है छोटा सा. वो Okay. कार्ड पे वो पोर्ट होता है, नेटवर्क का पोर्ट. वो कार्ड को आप निक कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. Okay. Okay. Nice. It is also a card similar to motherboard. Motherboard is also a card, right? A board. वैसे ही Mm, एक छोटा सा और एक बोर्ड होता है, वो नेटवर्क इंटरफेस बोर्ड बोलते हैं या कार्ड बोलेंगे उसको, ठीक है? तो निक कार्ड. okay. तो वो निक कार्ड पे वो पोर्ट रहेगा. दैट विल एक्सेप्ट द नेटवर्क केबल इनसाइड, ठीक है? So whenever you connect this network card, an IP address will be allocated to this machine by your router, right? Okay. Yes. आपके राउटर से क्या होगा, आपके मशीन को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है? सो व्हेन यू परचेज दिस मशीन, दिस कंप्यूटर फ्रॉम लेट्स से आप कोई दुकान से आप ये कंप्यूटर खरीदे, तो वो जो निक कार्ड रहेगा ना मदरबोर्ड पे, वो Mm. निक कार्ड पे बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस आएगा, ठीक है? हार्ड Okay. कोडेड रहेगा वो एड्रेस. दैट एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मैक एड्रेस बोलकर एक एड्रेस आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आपके निक कार्ड पे हार्ड कोडेड रहेगा. हार्ड कोडेड इन द सेंस, कोई चीज पंच इन करते हैं ना अपन. फॉर एग्जांपल, आपके It कार्स is में, like आपके बाइक्स में चेशी नंबर रहता है ना, चेशी नंबर बोलते हैं. yes, yes. It is embedded on the हाँ, products. एम्बेडेड. आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते. इट्स ऑलरेडी पंच्ड इन, Yes. ठीक है? तो ये जो निक कार्ड रहता है, निक कार्ड पे बाय डिफॉल्ट कंपनी की साइड से, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी निक कार्ड, दे विल पंच इन अ एड्रेस ऑन दैट निक कार्ड. दैट एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस. वो फिजिकल एड्रेस है, वो फिजिकली प्रेजेंट है आपके कार्ड के ऊपर, पंच इन हुआ रहता.
ठीक है, तो ये Physically एड्रेस, visible only. सॉरी, वो visible, is it visible on the products? हाँ, इट विल बी विजिबल, इट विल बी विजिबल, यू कैन Okay. वेरीफाई। तो ये निक कार्ड पे बाय डिफॉल्ट एक एड्रेस पंच इन होके आता, वो रहेगा मैक एड्रेस। So every आपके i- मशीन, सॉरी, so every laptop or computer is allocated with a मैक unique एड्रेस, physical address, MAC address. unique physical address, yes, exactly. MAC address will be unique for Yes. every device. You cannot have two devices with same MAC address. आपको unique रहेगा वो MAC address. Sorry. So physical address will be hard coded on your machine by the manufacturer itself, and then when you connect the network card, network cable to your network card, then logical address will get allocated by your router. ठीक है? Okay. How does the IP address looks like? Logical address. Four subnets होते हैं ना? You might have heard 192.168.2.2 Yes. Yes. something like that. So there will be four subnets. Whereas this MAC address will be a hexadecimal number. Okay, MAC address will have a hexadecimal number. All right, so this is something basics we have with networking. ठीक है, ये network के basics है. तो अब हम पढ़ेंगे कि why are these addresses important. ठीक है, Okay. so in order to have network access for your computer, you have to have a logical address assigned to that machine. ठीक है, logical address क्या है? आपके मशीन की पहचान है वो नेटवर्क में, आपके मशीन का एड्रेस है, आपके मशीन को लोकेट करना है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फाइल आई नीड टू एक्सेस फ्रॉम योर कंप्यूटर, सो योर कंप्यूटर शुड बी इन नेटवर्क विथ माय नेटवर्क, मतलब मेरे नेटवर्क में आपका मशीन कनेक्टेड रहना है. सो आई कैन एक्सेस योर मशीन एंड आई कैन एक्सेस दैट फाइल फ्रॉम योर मशीन with the help of the network address, that is the IP address. IP address से मैं क्या करूँगा, आपके मशीन को कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके फिर आपके मशीन से वो फाइल एक्सेस करूँगा. Like we do the remote desktop connection, right? Let me share my screen quickly. Hmm. ये जो करते हैं हम in order to connect to any computer, this one, This is right? the IP Remote address. desktop connection, IP address provide करेंगे तो वो मशीन को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, so we will provide the IP address of the computer which we want to connect over the network, and then we will connect to that machine with the help of the IP address. ठीक है, this is about IP addressing, MAC address and physical address and logical address. Okay, Yes. and coming to your router, तो अभी राउटर में एक टेबल मेंटेन होता है. लेट मी शो यू समथिंग. दिस इज माय राउटर, डी लिंक का मेरा राउटर है घर का. ठीक है, अभी यहाँ it will keep a record of it. Hello, you're still connected? Okay. So whenever this router allocates any IP address to any machine over the network, it will keep a record of it. वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता है? ये टेबल के थ्रू. इट इज कॉल्ड मैक टेबल. ठीक है, ये टेबल में क्या मेंटेन करता है? इट विल मेंटेन द नेम ऑफ द मशीन, व्हाट इज द आईपी एड्रेस allocated, and what is the physical address of that machine. ये physical address, this is what MAC address looks like. ठीक है, visible है? Is my screen Yes. visible? Yes. Right. Yes. Yes, This Ravi. is the MAC address of that machine, and this is the IP address allocated to that machine as of now. So So this, this is, Ravi, one moment. yeah. This IP address changes when the physical machine is connected to a different router or networks. Exactly, definitely. It will keep changing depending upon the IP reallocation you're doing. I mean, even in the same network, if you, let's say, if you restart the router, or if you restart the client machine or the computer, again a new IP will be allocated.
right? Okay. Yeah. So IP address will keep on changing, but MAC address for a particular machine will be unique, and it will never change, क्योंकि वो तो उसका physical address है. Physical address कभी change नहीं होगा computer का. Got it. Okay. So now we are going to discuss a scenario. Let's say I'm going to start a company. ठीक है, एक कंपनी, और लेट्स से एक छोटा सा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग लाइक आईटी सपोर्ट कंपनी और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू परचेज लॉट ऑफ कंप्यूटर्स. लेट्स से 200 computers I have purchased, 200 desktops, and now I have hired people from out. मतलब मैं क्या किया, एम्प्लॉयज को हायर किया. Around 200 employees I have hired. ठीक है. Or let's take an example. Wipro is starting a new campus in Hyderabad. ठीक है, एक नया campus start किए विप्रो ने. So when that new building gets started, they will have a lot of computers in place, right? A lot of new employees will be working from there, like 100 or 200 employees, for example. तो Mm. अभी क्या होगा, अभी ब्रांड न्यू मशीन्स है मेरे पास. आई हैव ब्रांड न्यू 200 मशीन्स ओवर द नेटवर्क. दे आर कनेक्टेड. उनको मैं क्या किया, एक राउटर के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया. ठीक है. आई हैड माई आईटी टेक्नीशियन टीम हु हैज सेटअप द राउटर. राउटर सेटअप किया, और फिर राउटर से क्या किया ये लोग, नेटवर्क केबलिंग एस्टेब्लिश करके सारे 200 मशीन्स को एक नेटवर्क केबल्स के थ्रू एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिए. ठीक है. Yes. नाउ हाउ डू आई allocate IP addresses to this machine? How will it work? मतलब I mean I have the router connected to all these machines. Now I want to allocate IP addresses to all these machines. So how does this IP allocation works with the router? Have you ever heard about DHCP? DHCP No, client and DHCP server? I've heard the name. I don't know what it Okay. actually. So let me go to the network settings once. ये मेरे network cards है, right? This is how your network cards looks like. Have you ever seen this page in your computer? Yes, नेटवर्क yes. कनेक्शंस. हाँ, ये जो है ना नेटवर्क केबल अनप्लग्ड, ये जो इथरनेट बोल के जो लिख के आ रहा है आपको, दिस इज योर निक कार्ड, नेटवर्क Okay. इंटरफेस कार्ड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. Mm. अगर आपका नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड है, देन यू विल सी दिस इथरनेट Flat. Okay. Okay. कार्ड ओवर हियर. Really, I could see this D-Link page on screen. Is that what you're presenting? No, आई एम presenting something else. Maybe your screen is not refreshing. Uzma, are you able to see this ethernet cables, Yes, I'm able to ethernet see. cards? Okay. I'll um exit and I'll come back again Yeah, if I you see. can rejoin, Raghav. Raghu. Let me know once you have rejoined, okay? I'll proceed then. Anyways, I'll have to admit you. Okay. Is it visible now? Okay. So this is your NIC card. Okay. So when you have to allocate an IP address to your NIC card, you will go to IP version v4, IPv4, and then you will allocate an IP address to this machine. Right? आप क्या करेंगे, यहाँ पे IP addresses allocate करेंगे manually. Mm. ठीक है. When you Yes. click on this second option, it will give you the options to give an IP address to your machine. And there is something called I obtain an IP automatically. Mm. Do you know how this automatic thing works? How does IP addresses gets allocated automatically? Maybe it's like when they are connected, all of them are connected to a same network. It will Mhm. give unique numbers. Exactly, something like that. So that is how DHCP works. That is where DHCP comes into picture.
So what is DHCP? DHCP is a kind of role in in Windows Server. Okay, Windows Server जैसे हम लोग क्या किए थे यहाँ पे server manager. Let me connect to the machine. Oh, okay, I had to restart the computer for some reason. Okay, so DHCP. Do you guys remember a server role called ADDS that we installed in our server operating system? Active Directory Domain Services. Yes, yes. Yeah, Yes. similar to that role, we also have something called DHCP as a role in server operating system. In Server Manager, when you go to add roles and features, you will see something called DHCP. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, Dynamic Host Configuration Protocol. This is DHCP. What it does is it will dynamically or automatically it will allocate IP addresses to client machines. ठीक है, DHCP role allocates IP addresses automatically to the client machines. Now, how does this happen? Let's discuss in detail the process of IP allocation in DHCP. This is an interview oriented question, very important question. How does DHCP allocates IP addresses to client machines? What is the process? So there is a process called DORA, DORA. Okay, DORA process. DORA. Please make a note of this. This is a very important interview oriented question. Okay. So, what is this process? DORA. D stands for discover, O stands for offer, R stands for request, A stands for acknowledge. Discover, offer, request, acknowledge. DORA process. In this four step of process, IP allocation is completed. Okay, with this four steps, IP allocation is completed with DHCP server. Okay, so each router, I mean, what type of router you may have at your home, like D-Link router or any kind of router you're using at your home, every router will have a DHCP server. Okay, a DHCP configuration inside it. Okay, every router will function as a DHCP server. Okay, so you will have all the DHCP configuration done on your router side. So it will allocate the IP addresses to your machines. Similar to you can have a DHCP server in your environment, or else if you're using a router will have the DHCP features already available. So it will do the it will work as a DHCP server. Okay. So how does this IP allocation works with DHCP? So discover. What will happen is whenever you turn on the machine. So coming back to the same example, Wipro has started a new campus in Hyderabad. Okay, and they have like 200 brand new computers placed in. Okay, and now these computers has to be connected over the network. They have to get a IP address, right? Brand new machines, they're just brand new, operating system has been installed. Now IP address needs to be allocated. Are you on same page, guys? Following or any confusion? No, yes, you're following. Okay, It was. so now these brand new machine, when you turn them on, when you press the power button, ठीक है, आप जब मशीन को ऑन करेंगे तो वो मशीन में क्या होगा, DHCP client enable होगा. The first thing which gets enabled, आप कभी कभी notice किए होंगे, when you turn on the machine, a black screen will come up, and it will say looking searching for DHCP server. Okay, Yes.
एक कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे कुछ खुलता, उसमें मैसेज आएगा सर्चिंग फॉर डीएचसीपी सर्वर बोल के, फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। So what happens is whenever you turn on the machine, a client machine in the sense we have learned about this, right? We have discussed Yes. what is a client machine, what is a server machine, right? तो client operating system जहाँ पे है वो client machine से, ठीक है। तो जब भी आप client machine on करेंगे, that machine will enable DHCP client service। एक सर्विस रहेगी हर मशीन में, that is called DHCP client service। वो क्लाइंट सर्विस क्या करेगी, एनेबल होके आप अगर वो कंप्यूटर को पीछे से अगर आप नेटवर्क केबल कनेक्ट करके रखे, ठीक है, लेट्स से यू हैव कनेक्टेड द नेटवर्क केबल टू दैट मशीन, वो दी निक निक पोर्ट, वो जो पोर्ट रहेगा पीछे, दैट पोर्ट इज कॉल्ड इथरनेट पोर्ट। ठीक है, वो पोर्ट को अगर आप केबल लगा के रखे, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल Razi, your voice is सर्च फॉर breaking. डीएचसीपी सर्वर। सॉरी, Your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग। Raghu, how about you? It's good for me. It's good for you. अभी आपने जो repeat किया था, can you please repeat it once Yeah, again? I'll repeat it once again. So these 200 brand new machines, you have connected them with the physical network cables. ठीक है, network cables connect कर दिए आप, ये सबको क्या किया आप, एक router से connect कर दिए। ठीक है। Now when you turn on these machines will search for DHCP server। ये मशीन में क्या होगा, एक DHCP client service enable होगी। ठीक है, हर कंप्यूटर में हर हार्डवेयर मशीन पे डीएचसीपी क्लाइंट सर्विस रहती है। ठीक है, दिस सर्विस विल सर्च फॉर डीएचसीपी सर्वर इन द नेटवर्क। अगर आप ये कंप्यूटर्स को नेटवर्क केबल कनेक्ट करके रखें, ठीक है, इफ यू हैव कनेक्टेड द केबल्स टू दीज मशीन्स, थ्रू दैट नेटवर्क केबल दे विल दे विल ट्राई टू सर्च फॉर द डीएचसीपी सर्वर इन द नेटवर्क। ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? Yes, got it, हाँ. Razi. वो जो नेटवर्क केबल्स कनेक्टेड है ना मशीन्स को, वो केबल के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, वो केबल्स के थ्रू वो नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्चिंग फॉर डीएचसीपी सर्वर बोल के। ठीक है, दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड डिस्कवर रिक्वेस्ट। जो डोरा प्रोसेस का जो डी है ना, फर्स्ट स्टेप, दैट इज डिस्कवर। योर मशीन्स विल ट्राई टू डिस्कवर अ डीएचसीपी सर्वर इन द नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज डिस्कवर? Yes. फर्स्ट Yes. स्टेप, डिस्कवरिंग इज सर्चिंग फॉर समथिंग, राइट? डिस्कवर It's करना मतलब like कोई the चीज को ढूंढना। client सॉरी, machine looks for the DHCP server. या क्लाइंट मशीन व्हेन यू टर्न इट ऑन, वो जैसे आप मशीन को ऑन करेंगे, क्लाइंट मशीन क्या करेगा, वो नेटवर्क केबल के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सारे नेटवर्क में, सेंड करके ढूंढेगा डीएचसीपी सर्वर को। इट विल सर्च फॉर द डीएचसीपी सर्वर। दैट सर्च रिक्वेस्ट इज कॉल्ड डिस्कवर। इट विल ट्राई टू डिस्कवर अ डीएचसीपी सर्वर इन द नेटवर्क। होगा उस टाइम पे वो 200 मशीन्स क्या करेंगे, 200 मशीन्स एक साथ जब आप ऑन करेंगे, सारे मशीन्स एक साथ एक डिस्कवर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो नेटवर्क में। फिर वो लोग क्या करेंगे, डिस्कवर रिक्वेस्ट सेंड करके दे विल फाइंड समवन लाइक द राउटर। राउटर मिलेगा वो लोग को, ठीक है, नेटवर्क में, बिकॉज यू हैव कनेक्टेड ऑल दीज मशीन्स टू अ राउटर। ये राउटर में डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, router will act as a DHCP server. So जब when they will find the router, then router will offer them a set of IP addresses. ठीक है, the next step, डोरा प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्या है, ऑफर। डिस्कवर के बाद ऑफर है। ऑफर में क्या होता, राउटर, that router is nothing but it is having the DHCP server configuration inside it। ठीक है, राउटर में आप क्या करेंगे, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। सो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो राउटर में है, like this one, let me show you something. My screen is visible, right? Yes. हाँ. So this is my router. ये राउटर में मेरे पास DHCP रेंज है, DHCP सर्वर सेटिंग्स। This is what it is, DHCP server settings। इसमें क्या है, IP पूल रहेगा, एक पूल रहेगा। पूल क्या है, 192.168.0.2 से 192.168.0.254।
कितने आईपी एड्रेसेस होगा इसमें? .2 से 250. .254, that means 252 IP addresses I can allocate, right? Yes. तो ये DHCP सर्वर में कितने IP एड्रेस की रेंज है अवेलेबल? 252 IP एड्रेसेस I can allocate. तो अभी वो जो 200 मशीन्स जो मैं टर्न ऑन किया, ठीक है, वो जो 200 मशीन्स में जो टर्न ऑन किया, वो 200 मशीन्स को I can easily allocate IP addresses because I have a pool of 252 IP addresses. ठीक है, तो ये राउटर राउटर को वो लोग डिस्कवर कर लिए, डिस्कवर स्टेप इज कंप्लीटेड, दे हैव फाइंड राउटर, राउटर को वो लोग ढूंढ लिए नेटवर्क में. नाउ सेकंड स्टेप, ऑफर दिस DHCP server which is sitting in the router. This server will offer them a list of IP addresses. इसके पास जो पूल है ना, वो पूल में से जो जो IP addresses अवेलेबल है वो लिस्ट ऑफर करेगा. जैसे आई मीन इफ अ मशीन कम्स अप, जो क्लाइंट मशीन है वो क्या करेगी, डिस्कवर करेगी, डिस्कवर करने के बाद DHCP सर्वर क्या बोलेगा, ठीक है मेरे पास ये IP एड्रेसेस है, यू कैन पिक वन. दिस इज कॉल्ड ऑफरिंग. ऑफर के बाद फिर रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट दैट इज DHCP क्लाइंट विल रिक्वेस्ट, ओके गिव मी दिस IP एड्रेस, मेरे को ये IP एड्रेस दे दो. ठीक है, so it will acknowledge, DHCP server will acknowledge that this IP address is allocated to this machine, this IP address is allocated to this machine बोल के वो क्या करेगा, एक टेबल मेंटेन करेगा, right? So on this table it will mention this IP address is allocated to this machine. Okay, following? Yes. So in the MAC table, it will add an entry right away stating that this IP address is allocated to this physical machine. That means जो machine का MAC address है वो store करेगा अपने अपने records में, mention करेगा कि ये machine को ये IP address allocate है at the moment. So with this DORA process, this MAC table will get an entry, a new entry. क्लियर है और कुछ कंफ्यूजन है? डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज. Everything is Clear. clear, Razi. Just one doubt at request phase. If request phase में like one or more than one systems request for same IP address, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. दैट इज द रीजन दिस टेबल इज देयर. अगर ये टेबल में ऑलरेडी मेंशन है कि ये IP एड्रेस ये मशीन को एलोकेटेड है, देन दिस IP एड्रेस विल नेवर बी ऑफर्ड टू एनीवन एल्स. वो जो सेकंड स्टेप है ना, ऑफर, जहां पे DHCP Yes, सर्वर yes. ऑफर करेगा कि ये IP एड्रेसेस अवेलेबल है, इसमें से एक पिक कर लो. तो अगर ये IP एड्रेस ऑलरेडी किसी को एलोकेटेड है, then this IP address will be excluded from the offer list. Okay, so that is blocked. हाँ, ये किसी को allocated है ऑलरेडी, it is blocked, it is not available to use. अभी कोई और के लिए ये available नहीं है IP address. Got it. Thanks. उस्मा, clear है? One doubt. Yeah, अभी ये restart करेंगे हम machine. Then this IP address, new IP address will be allocated to the exactly. फिर से डोरा प्रोसेस रन होगा, फिर से ऑफर करेंगे लिस्ट. इट इज देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट इन द सेकंड ऑफर, अभी आप समझिए लास्ट टाइम जब आप मशीन रीस्टार्ट किए थे, तो वो जो जी ऑफर किए थे ना, एक 10 IP एड्रेसेस ऑफर किए थे, उसमें से आप एक पिक हाँ किए थे. ठीक है, अभी देयर आर हाई जी चांसेस के नेक्स्ट टाइम जब ऑफर करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस के इट विल पिक some other IP एड्रेस, राइट? okay Again 10 to 15 लिस्ट की ऑफर रहेगा, तो it will pick some other IP address at that time. okay clear. ठीक है, so this is how DHCP works. DHCP server and DHCP client will do a communication between them with the help of this DORA process, and they will get an IP address. Every NIC card will have a IP address. अगर आपकी मशीन में 2 NIC कार्ड है या 3 NIC कार्ड है, then your machine will have 3 IP addresses. Like this machine, if you see host, अभी ये होस्ट मशीन में मेरे पास मल्टीपल NIC कार्ड्स भी है
And another thing is I have virtual machines running inside this physical machine, right? अभी आप लोग को Yes. याद होगा वो हाइपर वी में अपन क्या किए, वर्चुअल मशीन्स बनाए। वो वर्चुअल मशीन Mm. के लिए अलग आईपी एड्रेसेस एलोकेटेड है, तो वो भी यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। ठीक है। Okay. अब ये जो 3 आईपी एड्रेसेस है, दे आर उनका एक ही नाम आ रहा है, कंप्यूटर का नाम एक ही है, होस्ट। because that lab server which I'm using, that is named as host, but वो lab server में अपन virtual machines भी बना करके, तो वो virtual machines के जो IP addresses है वो भी यहाँ पे list out होंगे, because this router itself is allocating IPs to those virtual machines as well. Okay, now let's take a practical look at this DHCP configuration. Do virtual machines have this MAC address, Razi? Yes, they do have। वो जो वर्चुअल निक कार्ड जब आप एलोकेट करते हैं ना, आई मीन फॉर अ वर्चुअल Mhm. मशीन यू विल हैव अ वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो व्हेन दैट निक कार्ड इज जनरेटेड, it is generated with a unique MAC address, Okay, though it is virtual but it will be unique. got it, Razi. So what I did, I just added a role, that is DHCP। सिर्फ add roles and features में गया मैं और एक role add कर लिया DHCP। Now we'll look at the configuration part of DHCP। ठीक है। एडिंग अ रोल इज सिंपल, राइट? जस्ट ऐड रोल्स एंड फीचर्स करो, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, ऐड हो जाएगा रोल। वो ऐड होने के Yes. बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा वो देखें। ओके, सो दिस इज योर DHCP विजार्ड। अभी यहाँ पे IPv4 है, IPv6 है। ठीक है। वर्जन आईपी एड्रेसेस के दो वर्जन होते हैं, एक है वर्जन 4, एक है वर्जन 6। एज ऑफ नाउ वर्जन 6 इज नॉट दैट being used, उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। IPv4 is what we are using at the moment. So यहाँ पे क्या होता है, IPv4, when you create the DHCP server, likewise in your router, you have a range of IPs selected, right? 0.2 से 0.254 तक आप क्या किए थे, IP addresses select कर लिए थे। Similarly, I have a company, I'm working in a company, ठीक है। अभी मैं router पे depend नहीं रहूंगा, I will have my own DHCP server configured। I cannot depend on routers, I have to have a dedicated server for for allocating IP addresses। ठीक है, एक separate server मैं dedicate करूंगा to allocate IP addresses to my client machines। तो ये जो मेरा DHCP server है, इसमें मैं क्या करूंगा, एक scope define करूंगा। Scope in the sense the range of IP addresses from which the IPs will be allocated। I will name it as IP pool। So now I have to give a range of the IP address, like similar to in ये router में कैसा था, एक range define है ना, Yes. वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे कंपनी में जो मैं DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करके रख रहा हूँ, वो सर्वर पे भी I will create a range। I will give a range so that this DHCP server will allocate IP addresses from that range। ठीक है, 1 से 250 I'm giving। Subnet mask length we don't need to discuss, that will be something else, we don't want to go into that discussion। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, एक रेंज दे दिया। ठीक है, we have given a range। Let's say you want to exclude one or the other IP address from the range।
ठीक है, लेट्स से कोई एक आईपी एड्रेस है, वो आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। यू डोंट वांट टू, अभी ये 250 की जो रेंज है, देयर आर लाइक 249 आईपी एड्रेसेस, राइट? नहीं, 1 से 250 इट विल बी एग्जैक्टली 250। सो ये जो 250 आईपी एड्रेसेस है, उसमें से कुछ दो तीन आईपी एड्रेसेस है जो आपको यूटिलाइज नहीं करना है। यू डोंट वांट that IP to be offered to anyone, or that IP to be that IP should not be allocated to any server or any machine in your network. तो वो IPs को अगर आप exclude करना चाह रहे, then you can exclude them, और यू कैन एक्सक्लूड अ रेंज। अब समझिए वो वन टू 250 के बीच में एक रेंज है जो मेरे को एक्सक्लूड करना है। लेट्स से 192.168.3.100 से 192.168.3.110। तो ये जो 10 आईपी एड्रेसेस है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम रेंज। ये जो रेंज में जो आईपी एड्रेसेस है, ये 10 आईपी एड्रेसेस मुझे एक्सक्लूड करने हैं, तो आई कैन एक्सक्लूड देम, or else I'll put it blank. I don't want to exclude anything. Say next. Now this is called lease duration. This is very important and interesting. Lease, what do you understand by lease? कोई चीज आप लीज पे देते, लेट्स से देयर इज आपका आपका कोई घर है, आप लीज पे दिए तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए देते, राइट? Yes. इतने टाइम तक ये घर लीज पे है, तो वैसे ही इतने टाइम तक ये आईपी एड्रेस लीज पे है। लीज पे है इन द सेंस, when you have allocated an IP address to a particular machine, there will be a dedicated time period। उतने टाइम तक वो मशीन का वो आईपी एड्रेस रहेगा। आई मीन दैट आईपी एड्रेस इज गिवन टू दिस मशीन फॉर अ particular lease duration। that lease duration is by default 8 days। ये जो है 8 days by default रहेगा। if you want to change you can change। 8 days के बाद क्या होगा, फिर से डोरा प्रोसेस रन होगा, and it will allocate a new IP address again। even if you don't restart your computer, even if you don't restart your router, let's say 8 days complete हो गए, then again it will get a new IP address with the again the lease duration will be renewed। ठीक है, clear with the lease duration? One doubt. Yes, Ravi. हम्म। क्या अभी हुआ? जो आप 8 days के लिए आपने लीज पे दिया है, राइट? जी, तो वो सेम आईपी एड्रेस ही, मतलब 8 days तक वही सेम आईपी एड्रेस रहेगा। राइट। पर when we restart the router, नहीं, अगर तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से नया आईपी एड्रेस अलॉकेट होगा, अगेन डोरा प्रोसेस रन होगा, एंड अगेन न्यू आईपी विल बी असाइन। व्हेन एन आईपी इज असाइन्ड द लीज ड्यूरेशन विल बी 8 days। अगर 8 days तक अगर आप रीस्टार्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है, यू आर यूटिलाइजिंग इट रेगुलरली विदाउट रीस्टार्टिंग और एनीथिंग, but again when the lease duration is reached, again Dora process will initiate and it will reallocate the IP address। जैसे कि clear. refresh होगा, every 8 days IP allocation will get refreshed in your Okay, system। thank you. You're welcome। ठीक है, so if you want to configure advanced options, no, we don't want to go with that। That's it। router का IP address, so let's say no over here। That's it। I think we can go with the uh, scope creation। ठीक है, अभी ये scope creation के बाद, so there is another scope available over here। There is another thing inside a scope, you will have something called reservations। So what is reservation? New reservation। तो रिजर्वेशन इन द सेंस, अभी कोई स्पेशल कैटेगरी के कोई लोग हैं, ठीक है, सो यू वांट टू रिजर्व समथिंग फॉर देम, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 250 आईपी एड्रेसेस है टू अलोकेट टू एनीवन। वो 250 में से कोई कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जैसा कि कोई आपके कंपनी का मैनेजर है, राइट, और कंपनी का ओनर है, ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर कोई कोई बड़ा आदमी है। दैट पर्सन डजंट वांट हिज आईपी एड्रेस टू चेंज।
every time. ठीक है, he wants a specific IP to be allocated for him. ठीक है, अभी Okay. जैसा रघु है, रघु के नाम से मैं एक रिजर्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ. रघु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन दिस कंपनी, सो आई वांट टू एलोकेट अ स्पेसिफिक. रघु क्या किए, एक अब जैसा रहता है ना कि आपके गाड़ियों पे, आई मीन योर व्हीकल्स, यू विल परचेज सम फैंसी नंबर्स. ठीक है, और आप बोलेंगे कि ये फैंसी नंबर मुझे चाहिए बिकॉज आई मीन आई वांट टू बी यूनिक. ठीक है, आई डोंट वांट अ रैंडम नंबर, आई वांट अ यूनिक नंबर. तो अब जैसे कि आप 111 सेलेक्ट किए. ठीक है, तो क्या होगा, ये रघु का जो कंप्यूटर है, रघु का जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप का मैक एड्रेस यहाँ पे मैं एंटर करूंगा. ठीक है, आई विल क्रिएट अ रिजर्वेशन फॉर रघु's लैपटॉप. रघु के लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, आई विल हैव टू एंटर इट ओवर हियर, एंड दैट फिजिकल एड्रेस विल बी एलोकेटेड विद दिस यूनिक आईपी एड्रेस, एंड इट विल नेवर चेंज. इवन अगर DHCP अगर फिर से डोरा प्रोसेस इनिशिएट होगा, लेट्स से इवन इफ Raghu's laptop is reaching the least duration, again the DORA process will be initiated, and again the same IP will be allocated. और ये जो IP address है, this will be excluded from the offerings which are given to others. ठीक है, मतलब ये IP address किसी और को ऑफर नहीं होगी कभी भी, because this is reserved for Raghu's laptop. Clear with the reservation? Any doubts? Clear. Got it, Razi. Clear. All right. So this is about DHCP, all about DHCP. Why do we use DHCP? So DHCP is helpful in allocating IP addresses automatically to the client machines over the network. Okay, I wanted to discuss DNS as well. Shall we go ahead with DNS? Yes. 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 Okay, because I wanted to start Azure AD from tomorrow. It's a small topic, DNS, domain name system. So domain name system is something very simple. DNS के बारे में तो आप लोग ने सुना होगा ना? I mean, you must be knowing what is DNS. Any basic Heard idea but on not this? Okay. no, Razi. Okay. So before we discuss about DNS, every computer over your network will have a physical, I mean a logical name, I mean एक user friendly name रहेगा, and it will also have a logical address, that is the IP address. Let's say I don't remember the IP address of this machine, but I want to communicate to this machine. So how I will be able to communicate? I can do the ping, right? Ping space host. It will, no, yeah, I'm getting a reply. Okay, it's giving the MAC address directly. Host.mujahid.tech. Okay. DNS is like it translates the domain name to IP address, right? Exactly. Domain name to the IP address and IP address to domain name. So forward lookup and reverse lookup. So DNS, what it does is it will translate the name to IP and IP to name. So every machine over the network will have a physical, I mean, a user-friendly name, and that user-friendly name is just for our understanding. ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो यूजर फ्रेंडली नेम है. The name itself says user friendly.
तो हमको अंडरस्टैंड होने के लिए वी हैव अ नेम गिवन टू दैट मशीन, बट over the network it will communicate through the IP address only, right? Over the network it is identified with the IP address itself. IP address is वो मशीन की पहचान है नेटवर्क में, ठीक है? ओवर द गिवन नेटवर्क आपके कंप्यूटर की भी एक पहचान रहेगी, वो पहचान किससे रहेगी? आपके आईपी एड्रेस से रहेगी। लेकिन यू कैन नॉट रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ लाइक लेट्स से 200 मशीन्स, राइट? आपके Yes. नेटवर्क में 200 मशीन्स है, 200 मशीन्स के आप आईपी एड्रेसेस याद नहीं रख सकते। तो आप क्या करते? यू विल गिव अ यूजर फ्रेंडली नेम। अब जैसा कि उज़मा का मशीन है तो उज़मा डॉट होस्ट डॉट उज़मा डॉट टेक, ठीक है? ऐसे कुछ नाम दे देते। रघु का मशीन है होस्ट डॉट रघु डॉट टेक, ठीक है? तो आई विल गिव अ यूजर फ्रेंडली नेम टू ईच ऑफ द लैपटॉप सो दैट आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज हिम फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन communication के लिए over the network, if any files has to be shared or something has to be done, machine how machines will recognize each and every one of them with the help of IP addresses only. Machines will communicate with the help of IP addresses itself, ठीक है? Let's take Yes. a simple example. अभी रघु इज वर्किंग इन अ कंपनी सेम विप्रो, ठीक है? विप्रो में रघु काम कर रहे हैं, ठीक है? ही जॉइंड विप्रो रिसेंटली। अभी क्या हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, रघु के बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए विप्रो में। सो लेट्स से ही हैज लाइक 50 to 60 फ्रेंड्स। अभी 50 60 फ्रेंड्स के फोन नंबर्स रघु याद नहीं रख सकते, राइट? यू कैन नॉट रिमेंबर 50 60 फोन नंबर्स। सो हाउ यू विल स्टोर देम, रघु? आप क्या with करेंगे? name, their एक name. आइडेंटिफाइबल नेम दे देंगे, ठीक है? जैसे कि आपने क्या किया, आप यू मेट मुजाहिद, आप क्या किए? मुजाहिद बिकेम योर फ्रेंड इन विप्रो, सो यू विल सेव हिज नंबर स्टेटिंग मुजाहिद विप्रो, ठीक है? तो आप इजीली, Yes. आपको याद आ जाएगा जब भी आप मुजाहिद को कांटेक्ट करना है, यू कैन रिकॉग्नाइज हिम इजीली। हाँ, मुजाहिद विप्रो से ये नंबर है, आई हैव टू कनेक्ट विथ हिम विथ हिज फोन नंबर। तो फोन नंबर्स हम याद नहीं रख सकते, right? But names we can remember easily. For that reason we have this contact list. Contact numbers जब भी स्टोर करना है, with the help of a user friendly name we store them in our mobile phones, right? जैसा कि हमारे कोई कॉन्टैक्ट बुक है, ठीक है? वो बुक में हम क्या करते हैं? नेम विथ फोन नंबर स्टोर करते हैं, सो आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज द फोन नंबर ऑफ द पर्सन आई वांट टू कॉन्टैक्ट। एट द एंड फोन नंबर पे ही डायल करना है, यू हैव टू रीच हिम विद द हेल्प ऑफ द फोन नंबर इटसेल्फ। आप अगर सिर्फ कीपैड में मुजाहिद बोल के टाइप नहीं कर सकते। इवन इफ यू डायल मुजाहिद इट विल नॉट कॉन्टैक्ट मुजाहिद, राइट guys? Yes. I don't know if I'm making sense. Yes. Yes, Razi, got it. हाँ, कीपैड में आपको नंबर्स डायल करना है, अल्फाबेट्स डायल नहीं कर सकते आप। मुजाहिद बोल के डायल करके यू कैन नॉट कनेक्ट टू मुजाहिद। सिमिलरली नेटवर्क में भी एट द एंड द कम्युनिकेशन विल हैपन विथ नंबर्स इटसेल्फ। आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन होगा। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस टू रिमेंबर हिज आईपी एड्रेस यू विल हैव अ यूजर फ्रेंडली नेम। सिमिलरली फोन नंबर, आई मीन फोन नंबर टू फोन नंबर आप कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए आप क्या करेंगे? कि नेम दे देंगे वो फोन नंबर को, दैट्स इट। Okay, so this is how DNS works. DNS will resolve IP address to name and name to IP address. Let's take a very good example. You want to open a website that is facebook.com. तो आपको फेसबुक एक्सेस करना है, फेसबुक खोलना है, तो आप कैसे खोलेंगे फेसबुक? रघु, कैन यू टेल मी हाउ यू विल एक्सेस फेसबुक? Well, I will enter the phone number or the email address. Then I'll go with the password. नो नो नो, आप फेसबुक वेबसाइट कैसे खोलेंगे पहले? I'll Facebook.com. go to, yes, You'll open a browser and you will type in facebook.com. So this yes, facebook.com आप you can remember easily, right? Facebook जो नाम है, हाँ. it's a unique name, you can remember easily, but machine will have to have a IP address. So my screen is visible, right? Yes. yes. So let's say if I want to open Facebook,
फेसबुक की भी एक आईपी एड्रेस रहेगी जो मशीन विल कम्युनिकेट विद, मशीन विल अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस. So I'm giving an IP address 157, 240, 192, 35. Understood? Hmm. Yes, Razi. For your convenience, it's facebook.com. But for machines, it's IP address again. So name to IP, IP to name, translation. ठीक है, अगर आप facebook.com टाइप करेंगे it will translate to the IP address. If you type in the IP address, it will translate to the name facebook.com. Similarly, let's say I want to access something called make my trip website. Okay, got it? So Yes, every Yes, clear. Razi. website will have a number behind it for communication. आपके convenience के लिए एक name दे दिए उसको makemytrip.com, so you can remember and you can access it easily. Any other website that you want to check the IP address and access it with the IP address? Give me any website which you want to access. Amazon. Yeah. Amazon के multiple रहेंगे, एक नहीं रहेगी, because Amazon is a online e-store, right? So they will have a lot of transactions. So they will have multiple IP addresses. So क्या रहेगा? I mean, Amazon. to balance the load, they will have multiple servers hosted for Amazon.com. Okay. I'll Nike go dot with, sorry, Nike.com. Nike. Nike. Can you spell me? Spell it to me, please. Nike. Nike. Okay, Nike.com. Okay. So it's 18.155. Let me make a note of this. 18.155.49.115. Okay. If I open this IP address, it will give me a warning. Okay. No, it's not accessible. Some websites will be protected because if you're directly targeting their IP address, it will be like it can be a attack on the IP address on the website. Okay, so they will be protected, some websites, but some websites will be accessible. So the purpose of DNS is also to protect the website with attacks. Let's give something else. For example, hmm, Instagram. Instagram.com, right? Or .in. Instagram.com. Okay. 157, 240, 192, 192, 174. It will give me a warning that you're directly accessing something with the website with the IP address, so it will give a warning. You can proceed. Oh, yeah, this is also secured. It will not allow you to access. Some websites will be protected, but some websites will be accessible. Like these two worked. Any other? Tell me something which is not that common, that widely used. Maybe Zomato. I think even Zomato will have a lot of other websites in place. So something which is very highly, I mean, which have very high browsing traffic. So that will be protected. I'll give a try. One second.
Samsung.com to 11:45:27. Okay, let's give it a try. Right, there you go. Samsung.com. Okay, Yes. Yes. understood. Yeah. So this is how DNS works, name to IP and IP to name. So we have two different zones, forward lookup zone and reverse lookup zone. Forward lookup zone is something like resolving name to IP address is called forward lookup. Resolving IP address to name is called reverse lookup. So DNS is used to resolve the request from name to IP, IP to name. That's it. Nothing much with DHCP, nothing much with DNS. Any questions or any doubts? Like if name is given, the IP address will be shown up, or if IP address is given, the name will be shown up, right, Razi? Yeah, so the machines will communicate with the help of IP addresses itself. When you give a name in the backend, it will try to resolve Samsung.com with the IP. It will search for the IP. So there will be I mean, let's say this website, Samsung.com. So Samsung.com website is hosted somewhere in the Samsung data center, right? So that website has to Yeah. be available over the internet to access. Right. So when you're browsing over the browser, let's say you enter Samsung.com, so your computer, your client machine, or your browser will search for Samsung.com website over the network. It will try to resolve it over the network with the help of the IP address. It will search for the IP address. If the web server is available over the network, it will respond to this request over the internet, and then you get access to the website. So it's a long process. It will send a request, it will hit the data center of Samsung, and it will get the access to you over the internet, basically. Got it, Razi. Okay. Clear. Yeah, so this is about DNS and DHCP. With this, we complete the MCSC part of this training. So to be honest, I didn't get into much deeper of MCSC. There are other topics as well, which you might have seen in the training material which I have shared, right? There are other concepts as well, but we don't need to get into that deep because our target is to learn Azure Active Directory. The concepts required to understand Azure Active Directory have been covered. So I'm covering only those concepts which are required for you to learn Azure. Okay. So we don't want to go into deep dive of each and everything because we have to ensure that we are learning everything which is required for us to understand Azure Active Directory. And Azure Active Directory, we are learning to ensure that we are capable of getting a job in the market. ठीक है तो अपने को our target is to get a job in the market. So what all essential for you to understand, I'm covering all those topics. Okay. Razi, okay, my. Like, can you Yeah, please Usman. explain Kerberos in simple way? Like, Kerberos. Okay. yeah. Kerberos, there is a अच्छा, ठीक है, Kerberos we can discuss in detail actually. So Kerberos is a protocol. It is used for authentication in Active Directory. It's mentioned in the training material which I have Yes, shared, yes, right? Kerberos authentication protocol. So there is a ticket granting server, TGT server, ticket granting token, and a lot of other flows are there. I think we can discuss this definitely. Yeah. Thanks for bringing this up. So Kerberos authentication flow and everything, we'll take a look on this tomorrow for sure. Okay. 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 Thank Because you. there is a process of authentication, how authentication happens with Kerberos in Active Directory. So we can take a look on this. Okay.
because I don't think we can cover it in like 5 to 10 minutes. So it's better to have a session on this one. I'll stop the recording.